Hello guys and welcome back to Ask MBA YouTube channel where we are putting multiple videos for your quant section if you guys are preparing for your CAT 2024. Alright, now in this video we are going to have another important topic called function. Of course, it has lesser weightage as compared to all other quant topics, but yes, you'll be getting at least one similar type of questions from this particular topic, that is function. So it must be understood first. Now, before we directly jump into the question, I want you guys to understand that there are few things to be understood first before solving this kind of question. Now, the question is f of x equal to x square plus 2x, and the second function is g of x is equal to under root x plus 1. We can say we have given two functions where how the function is works is given as your definition. Now, this we can say the definition of this function f of x. This is the definition of this function g of x. Now, third, the last one is given as h of x equal to g of f of x. In fact, we have given only two functions, and the third function is the mixture of another given the previous two functions, that is h of x equal to g of f of x. Now, we can directly say h of x will be formed after putting the values of f of x in the function of g of x, right? This is we can directly conclude from the given function. The question is, what are the domain and the range of h of x? So before directly solving this question, I want you guys to understand what is the meaning of range and domain. डोमेन का मतलब क्या है, रेंज का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है जहां पे हम लोग इनपुट का वैल्यू पुट कर रहे हैं. इनपुट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल फंक्शन यहां पे दिया आपको f of x इक्वल टू, लेट्स टेक द सिंपल वन, g of x is equal to root of x plus 1. Alright, the meaning of domain and range is very much important. So let's just understand what is the meaning of domain and range. डोमेन का मतलब होता है ये जो हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज ऑफ x का वैल्यू क्या हो सकता है, दैट इज डोमेन, राइट? सो x का क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कौन सा x ले सकता है, नेचुरल नंबर है या कोई भी रैशनल नंबर हो या इंटीजर्स हो, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन about the nature of x. In this particular question, we don't have anything related to the values of x. So we can directly conclude x can be any number that will come from minus infinity, between minus infinity to plus infinity. This is what we call as a domain because we are finding out or we are considering the values of input, that is x. Alright. Now, what is your range? Range मतलब क्या? Range मतलब जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा if g of x का वैल्यू, that will be your range. So it will drastically be changed from your original value of x. x का जो भी इनपुट होगा उसे हम बोलेंगे डोमेन. इनपुट देने के बाद जो भी g of x का वैल्यू आएगा वो कौन से रेंज में हो सकता है, that will be your range. Alright, I hope you understood. Now let's understand what are the meaning of brackets, because in mathematics we have certain meanings for bracket. This is your open bracket. So if I put some range 0 to 1, what I can say about this range, it can take values between 0 and 1 but not 0 and 1. Alright, so it can take values from 0 to 1 but not 0 and 1. So 0 and 1 will be excluded from this bracket. What is the meaning of this one? This is your close bracket. So if I put range of 0 to 1, we can directly say 0 and 1 now included with your close bracket. So I can say if this can take the values from 0 to 1, of course as well 0 and 1. Now if I write something like this, 0 to 1, open bracket for 0 and close bracket for 1, now you can clearly understand it can take values from 0 but not 0 to 1. तो 1 भी ले सकता है, 0 से 1 सारे वैल्यूज आ सकते हैं. So यहाँ पे 0 is not included but 1 is included because of the function of brackets. So I've clearly explained the value of the meaning of domain, range and the functions of brackets. Alright, now this much input is sufficient to understand how this question will be solved. Alright, now the question is f of x is equal to x square plus 2x and g of x equal to x square, where h of x is given as g of x and f of x. So let's try to understand or let's try to solve this question by taking simple value of h of x. H of x is given as g of f of x, right? So we need to put
the value of f of x, right? So let's try to put the first function g of x given as x square plus 2x, x square plus 2x. All right. Now this entire equation will be value of x in terms of g, right? So we need to find out the g function, second one, and we need to use this term as x in the function of g. I hope this is clearly understood. क्या करना है हमें, g में तो हमने f of x डाल दिया बिकॉज ये पूरा आपका x था, तो ये x उठा के यहाँ पे डाल दिया f of x, ठीक है, डाल दिया x square plus 2x. Now this entire equation will work as x for g of x, ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल दो. g of x का फंक्शन क्या है हमारा, रूट ऑफ जो भी x है वहां पे ये पूरा जाएगा. सो x का वैल्यू यहां पे जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया आपका x का वैल्यू यहां पे, तो एक और प्लस भी तो यहां पे, राइट. ओके, फर्दर दिस विल बी सिंप्लीफाइड एज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. Alright, now further we cannot proceed, but yes, we can see this is your quadratic equation of x square plus 2x plus 1, where you will be getting x plus 1 as your root, right? So you will be getting, I hope you have studied how to solve your quadratic equation. I'm not going to explain how to solve quadratic equation because I have already posted multiple videos on that particular chapter. Here I can directly see that this can take particular values for x plus 1 whole square, right? This is the bracket of x plus 1 whole square, which will give you a quadratic equation of x square plus 2x plus 1. Now we can clearly see this root and square root will be cancelled out, square and square root. So you will get h of x is equal to x square plus 1 under mod. Now why mod? We need to understand this is square function overall which the root function is also working, right? Under which the root function is working. For example, what is the difference between x square is equal to 9 and under root 9 is equal to x? What is the difference between these two things? This is too much important to understand. x square equal to 9 का मीनिंग क्या हो रहा है कि 9 के कितने रूट्स आ सकते हैं. तो भाई यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो x के दो वैल्यूज आ सकते हैं, या तो 3b स्क्वायर आपका 9 आ रहा है, राइट, और -3 भी आपका 9 आ रहा है. सो नाउ इट कैन टेक टू वैल्यूज, दैट इज प्लस और -3. बट in case of second question, we are strictly asking what is the root of 9. Root of 9 will be only one value, that is +3, because we don't have perfect square for that particular -3, right? So ये दोनों चीजें आपको देखने में थोड़ी सिमिलर लग रही है, दोनों का इंपॉर्टेंट अलग अलग है, ठीक है, मीनिंग अलग है. आई होप दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड. नाउ दिस इज द टाइप सेकंड वन विच इज आई हैव रिटन हियर. रूट में स्क्वायर आ रहा है, सो आपका इसका एक ही वैल्यू आने वाला है जो आपका आएगा x प्लस 1 प्लस में. लेकिन क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको h ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, दोनों का मॉड के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्लस आना चाहिए उसका, इसलिए हम मॉड में लिख रहे हैं इसको वैल्यू. अब ये वैल्यू क्लियर है आपका h ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1. अब हमें बात करनी है डोमेन की. ये तो हो गया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हम लोग. डोमेन क्या होगा इसका और रेंज क्या होगा. नाउ इन केस ऑफ डोमेन आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन दैट डोमेन डिपेंड्स ऑन द इनपुट एंड इनपुट इज x. अब x के बारे में पूरे इक्वेशन में कहीं पे मेंशन तो किया नहीं कि भाई x का आपका वैल्यू कौन सा होना चाहिए, राइट. सो वी कैन अज्यूम दैट x कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, राइट, क्योंकि दिया नहीं है. अब मॉड में कोई भी वैल्यू डाल दो यहां पे, ये तो आपका प्लस देने वाला है. So x can take any value between -infinity to +infinity. Now why I put open bracket for -infinity to +infinity? Because we don't have particular value or the specific value for minus or +infinity. That's why we also always need to consider this bracket as open bracket. Second, range. Range के बारे में क्या बोला था? डोमेन से थोड़ा सा हल्का सा चेंज. रेंज मतलब क्या? इनपुट देने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा, द वैल्यू ऑफ h ऑफ x विल बी कंसिडर्ड एज योर रेंज. अब मैंने पहले से बोला कि इसका जो वैल्यू होगा ये तो आपका प्लस आने वाला है, क्योंकि इस फंक्शन से रूट के अंदर स्क्वायर रूट था, तो रूट के अंदर स्क्वायर था, सो इट मस्ट टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, सो इट विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो 0 विल बी टेकन, सो क्लोज, इंफिनिटी विल बी ओपन.
ऑलराइट, सो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने का यहाँ पे ट्राई किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो वी गेटिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ फंक्शन। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया कि फंक्शन कैसे काम करता है। आई विल बी कमिंग विद सम मोर फ्यू topics of few more important questions from this particular topic, so I want you guys to understand how the function work, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद फंक्शंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो थोड़े और ज्यादा क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करो। इन केस इफ यू वांट मी टू पुट फ्यू वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, please mention in the comment box. I'll be coming live or I'll be putting videos on YouTube on this particular topic. All right, thank you.